बोल रही थी। Anyways, very good evening, everybody. So, this would be a recorded session as most of you are busy, but let's start with level 1, module 5. So, we'll be covering thyroid. Let me just share my screen and we'll start with the session. So, I'm not going to cover with the anatomy, but the basic foundation which we do in functional nutrition that we will cover. Okay. So, uh, thyroid basics. Why TSH normal can still mean that there is a low metabolism. So, thyroid is not just a gland, it is a metabolic regulator. So, when I say so, that means that we need to understand the thyroid physiology पहले, which requires moving beyond TSH. ठीक है, सिर्फ TSH को देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं the story is not completed. And we should also look into the cellular hormone action. ठीक है, so उसी को देखते हुए we will going to examine the thyroid function through a functional and system based lens. ठीक है, so when I say system based lens, that means that uh, why the thyroid matters. ठीक है, so thyroid, obviously when we talk about thyroid, most of the people they immediately think about weight. ठीक है, क्योंकि वो उसको वेट गेन वेट लॉस के साथ ही जोड़ते हैं, बट मेटाबॉलिकली अगर हम देखें तो थायराइड रेगुलेट्स फार मोर देन द बॉडी वेट. ठीक है, सो यूजुअली हमने देखा है कि हाइपोथायराइड के पेशेंट्स होते हैं तो दे आर यूजुअली ऑन अ ओबीज और ओवरवेट कैटेगरी, और हाइपरथायराइड में द वेट गोज डाउन. ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, दो इट इज जस्ट नॉट मेंटेनिंग द वेट पार्ट. सो इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, दैट इज वन. सेकेंड, सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि जब तक ये रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे थायराइड इज सपोज टू गो इनसाइड ईच एंड एवरी सेल of the body to function. Third is the body temperature regulation. So this is also a essential part which is coming under the thyroid mechanism only. Fourth is the digestive speed. So let me just mute this phone. And with digestive speed, the bowel movement, the digestion rate, this is all kahin na kahin connected with the thyroid hormone generation, and it's actively participating into the body's mechanisms. And last but not the least, it affects the mood and the brain function. So it is very well connected with a मूड एंड कॉग्निटिव क्लैरिटी ऑल्सो. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं अगर वो हाइपोथायराइडिज्म है तो वहां पे दे हैव लॉट ऑफ मूड चेंजेस ऑल्सो. ठीक है, सो एज आई सेड दैट एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन थायराइड हार्मोन सिग्नलिंग, क्योंकि थायराइड हार्मोन अगर सिग्नल करेगा तभी हमारा बाकी के जो हॉर्मोन्स हैं या जो भी हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं वो वन बाय वन दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग. ठीक है, so that's why the key insight is that thyroid does not operate independently. ठीक है, basically it responds to the signals from the brain, to immune system, to gut, to stress hormones and to nutrient availability. ठीक है, क्योंकि TSH अगर आप बेसिक फिजियोलॉजी देखो, so the TSH will give command only to the thyroid hormone to produce T4 and T3. बट अगर उस बीच में बॉडी स्ट्रेस में है या कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं या स्ट्रेस हॉर्मोन्स जनरेट हो रहे हैं उस टाइम पे, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, and if the poor nutrient availability, so the T4 will not convert to T3, and T3 is the thing which body utilizes or uses as an active thyroid hormone. So when metabolism slows, we must ask what signals is the thyroid responding to. ठीक है, so it does not work independently, it works in again sync.
ठीक है, तो थायराइड इज नॉट द लीडर, इट इज अ बेसिकली कन्वेंशनली जब हम थायराइड को वी टेक थायराइड एज अ प्रॉब्लम। ठीक है, फंक्शनली वी थिंक दैट वी सी दैट द थायराइड इज अ रिस्पॉन्डर, रिस्पॉन्डर टू वही स्ट्रेस अगर हाई है या इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, और इफ द पर्सन इज टेकिंग वेरी लो कैलोरीज, ठीक है, और इफ द गट लाइनिंग इज कॉम्प्रोमाइज, तो ये सारे ही फैक्टर्स इसके अंदर आएंगे, योर ब्रेन सिग्नल्स, योर गट हेल्थ, योर स्ट्रेस हार्मोन्स, योर इन्फ्लेमेशन, ऑल दीज थिंग्स। तो अगर ये सिग्नल्स थायराइड सेंस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को डाउन रेगुलेट करेगा इंटेंशनली, because obviously when you have a poor nutrient window and when so many factors are coming in between, so it will respond to towards those factors and it will slow down its production also. ठीक है, so the thyroid is not the malfunctioning, it is basically adapting towards whatever the stresses are coming in day to day life. ठीक है, so that's why it slow the metabolism बेसिकली टू कंजर्व एनर्जी। अगेन बॉडी को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है और वो है अगर कुछ भी फाइट एंड फ्लाइट में जाएगा, सो बॉडी के जो जो भी हार्मोन जनरेशन है, जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं, वो सब ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएंगे जस्ट टू गो इनटू अ प्रोटेक्टिव सर्वाइवल मोड। So that's why the thyroid follows the body signals and it does not lead them. ठीक है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि थायराइड अगर इज नॉट सपोर्टिंग, अगर टीएसएच बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली ऑल दिस सिम्टम्स विल कम, बट फंक्शनली अगर हम देखें तो दिस इज द opposite of what we see conventionally, and we are not running or chasing just TSH, but the other things are very, very important. So the core thing is the thyroid hormone. The core idea is basically the hormone physiology. So once we understand the physiology, we will able to tackle every thyroid case in a better way. Okay. So the thyroid gland mainly produces T4. T4 is basically a inactive storage hormone. ठीक है, और T3 जो होता है is a active hormone which the body utilizes. ठीक है, so circulating T3 is not enough. ठीक है, जब भी हम चेक करते हैं T3 T4 TSH, तो यूजली आपका सिर्फ TSH देख के आपको ये बता दिया जाता है कि दिस इज नॉर्मल, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। बट जो टोटल T3 T4 है, दैट इज protein bound, so that we know basically what it is doing, but whatever the free levels are doing in the body, if the free levels are going like too high, so they are not being utilizing properly. ठीक है, सो और दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि ओनली T3 एंटर्स द सेल। ठीक है, which creates a metabolic action. So basically T3 binds to the receptors and trigger the metabolic activity. ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो थायराइड विल नॉट बी सपोर्टिव। सो हम एक सिर्फ TSH देखना इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। सो the core thing is that it is about how much the active T3 is functioning inside the cell. So वो एक लेवल है जो हमें हमेशा we need to consider. Okay, so TSH versus thyroid function. So TSH is a signal from the brain to the thyroid gland. So basically, it starts with it is a hypothalamus pituitary thyroid axis, basically, which runs the whole show. So this TRH will give command to TSH, and TSH in further give command to the thyroid hormone to produce T4 and T3. So this cycle you need to understand. It's very, very important. So it is not a thyroid hormone. It does not reflect the cellular metabolism, the TSH. So TSH tells us just this thing, that is the brain asking for more hormone.
ठीक है, सो इट इज जस्ट बी गिविंग अ मैसेज, इट टेल्स द थायराइड हार्मोन टू प्रोड्यूस। ठीक है, एंड इज द ग्लैंड रिस्पॉन्डिंग, सो ये दो ही चीजें हैं जो हमें टीएसएच से पता चलती हैं। ठीक है, एंड it does not convert, or it does not tell us that is the T4 converting properly, because converting properly के लिए तो we need to have a TPO, thyroid peroxidase, into the picture, or as well as the thyroglobin protein also into the picture, and is the T3 entering into the cells। ठीक है, so ब्रेन के पास मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसने कमांड दिया टू माय थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T4, एंड T4 विल गेट कन्वर्टेड टू एक्टिव T3। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ TSH को देख के उसी को मेजर करके वी जस्ट गेट टू नो कि क्या मेरा हेल्थ कंडीशन है या क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखने वाली हैं वो है सबसे बड़ी चीज़ इन्फ्लेमेशन। जब भी इन्फ्लेमेशन आएगी, so that will going to block the receptors which will not allow the T3 to enter in the cell and do the energy exchange things. So, and then is the reverse T3. Now, reverse T3 is something. So, T4 will get converted to T3. So, in case the body senses, or due to inflammation, or due to other factors involved, or due to molecular mimicry also, rather than producing active T3, the body will convert into reverse T3। ठीक है, so but then this level again is not, the test is not available here, but then few of the labs are there which do reverse T3। So what we do in India scenario is only we check the free T3, free T4, and the ultra sensitive TSH। ठीक है, so TSH measures the communication, not the outcome। ठीक है, आउटकम तो हमें क्योंकि T3 और T4 के उससे पता चलेगी कि वो प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी, या वो आगे उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी उसको यूज कर भी रही है कि नहीं कर रही है। So the key concept is basically the symptoms can exist despite of the normal labs। As I said कि TSH हो सकता है कि आपको नॉर्मल लगे, ठीक है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं लाइक फटीग, हेयर थिनिंग, और कॉन्स्टिपेशन, और कोल्ड इंटॉलरेंस, और अ वेट गेन, ठीक है, और अ ब्रेन फॉग। ठीक है, सो लैब्स में तो TSH नॉर्मल है, बट देन दे आर they and the doctors or whatever, and you also assume that everything is normal, but without recognizing that what T4 and how much T4 is converted into T3। ठीक है, so that's why, because the metabolism is happening at cellular level। ठीक है, so just chasing TSH will not going to tell us anything, and normal TSH से भी there is no guarantee that the metabolism is normal। So, most thyroid dysfunctions in functional practice is not about the production failure, it's about the conversion failure। ठीक है, so T4 जो है that should or that must be converted to T3 and become active। ठीक है, but this primarily happens in your liver and your gut। ठीक है, सो यहाँ से बिकॉज गट से भी अगर आप देखो तो 20% ऑफ योर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन और सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम द गट इटसेल्फ। सो अगर लीकी गट होगा, अगर इन्फ्लामेशन होगा, सो द प्रोडक्शन विल गोइंग टू हैम्पर। ठीक है, सेकेंड इज द लिवर। सो अगर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन पाथवेज आर ओवरलोडेड, ठीक है, अब इफ somebody is like OTPT and all the GGT and everything is messed up, definitely the conversion factor will go down। ठीक है, तो बॉडी विल अगेन वर्क ऑन द सिग्नल्स और द कमांड्स विच internal mechanism is giving, rather than just giving the message by TSH to thyroid gland to produce T4 and T3। Every hormonal production, like every hormone generation is ऑल्सो लिंक्ड विद अ नेगेटिव फीडबैक लूप। ठीक है, तो जो चीज सफिशिएंट होएगी उसका एक नेगेटिव फीडबैक लूप जाएगा कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, डू नॉट प्रोड्यूस इट। इवन इफ द TSH इज ओके, बट if the T4 and T3 conversion is poor,
the body will land up into fatigue, weight gain and all those issues. ठीक है, so यहाँ पे सिर्फ तभी हम बोलते हैं कि जब भी हम आरसीए करते हैं, वी ऑलवेज टेक अदर ऑर्गन्स ऑल्सो इन द लूप rather than just concentrating on one organ. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द थायराइड इश्यूज ऑफन बिगिन आउटसाइड द थायराइड ग्लैंड. ठीक है, क्योंकि कुछ सपोर्ट एक ऑर्गन से आ रहा है, कुछ सपोर्ट दूसरे ऑर्गन से आ रहा है, कुछ कुछ कन्वर्जन आपके न्यूट्रिएंट से जा रहा है. सो जब तक ये सारी चीजें क्लब नहीं होंगी, तब तक यू कैनॉट से दैट माई थायराइड इज वर्किंग नॉर्मल एंड आई एम दैट सपोर्टिंग इन ऑल दोज थिंग्स. So what conversion needs? ठीक है. So for every efficient conversion from T4 to T3, body needs adequate calories. ठीक है. So adequate nutrition means adequate calories. If somebody is following a low calorie diet or a very low carbohydrate diet or a very low protein diet, because tyrosine is one major ingredient which comes in for the uptake of the iodine or iodide, because it binds with the help of your this thing, thyroid peroxidase, and then it starts functioning. So any type of poor diet, okay, then a low grade inflammation also will affect your conversion. Then stress, लो लाइंग स्ट्रेस हो गया या लो इन्फ्लेमेटरी लोड हो गया, सो स्ट्रेस यूजली कंट्रोल द हॉर्मोन्स. ठीक है. देन हेल्दी गट, if the body senses that senses the stress or energy deficit, it intentionally reduces the conversion. ठीक है, क्योंकि एक चीज का जब आपके पास फ्यूल ही नहीं है, तो आप उसको हमेशा बॉडी विल ट्राई टू मेक इट इनटू अ अडेप्टिव फिजियोलॉजी रेदर देन अ फेलियर. अब उसको पता है कि मेरे पास दिस मच अमाउंट ऑफ कार्ब्स आने वाला है, दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन आने वाला है. ठीक है, मेरे पास सरप्लस में कुछ है ही नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग इन टू द ग्लूकोज मैनेजमेंट ऑफ द बॉडी. वाई डू आई मेक द हॉर्मोन्स? ठीक है. Okay, so this is the break which is there usually seen in thyroid metabolism when the stress is high or there is a emotional stress or the illness, maybe कुछ भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, और अ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, मे बी a severe calorie restriction. People go on a 800 kilocalorie diet, 1200 kilocalorie diet without noticing or realizing what the body requirements are. So that time also it gives a body a toughest time to to convert it into T3, and it produces reverse T3. ठीक है, तो reverse T3 is basically, as the name suggests, it is a inactive form and it blocks the T3 from binding to the receptors. ठीक है, so it is like applying a metabolic brake. ठीक है. So uh, body is saying what? Body is saying that the energy is limited or the danger is present, so slow down. So this is the way how body basically protect itself. So this is why aggressive dieting often worsens the thyroid symptoms. So why thyroid medicine often fails? So a common scenario, patient will be on levothyroxine, like levothyroxine, but the TSH is normal. ठीक है, but the symptoms persist. ठीक है, अगर आपने उसका वो रेंज भी देखा होगा, तो यूजुअली वी से दैट 2.5 and above of TSH will going to give you all the symptoms, no matter the pathological range is still 4.5 or 5, but then it is going to give you a tough time. ठीक है. So first thing to is to understand that people who take that thyroid medicine, that is basically T4 and body requires T3, the active form. ठीक है. So medication will only increase the circulating T4. ठीक है, बट कन्वर्जन जो है उसका वो पुअर ही रहेगा. ठीक है, और रिवर्स T3 हाई रहेगा, न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट है. ठीक है, बिकॉज when it comes to the conversion from T4 to T3, you need to have omega 3 vitamin A, then you need to have iodine, you need to have selenium, you need to have zinc to convert from T4 to T3. So there are so many nutrients step by step which are required.
That's why your conversion is usually impaired or poor, and the body will start producing the inactive form or T4, either T4 or a reverse T3 is high, और जो gut से जो produce हो रहा है gut inflammation, that is also on a higher side. So this is basically a cellular response, and that's why these symptoms persist. ठीक है? Hormone availability does not equal the hormone action. अगर वो होता तो ऐसा वाला सिनारियो कभी आता ही नहीं. Okay, so the most functional reasons for persistent symptoms, ठीक है, as I just spoke about the poor T4 to T3 conversion, ठीक है, high reverse T3, gut inflammation, nutrient deficiencies, so these all things are driving the body, ठीक है, so gut dysbiosis, so that's why when we add a probiotic, the people start responding. That's why when we add a little nutrients, a good quality protein, or a good amount of minerals into their diet like zinc, selenium, and all those things, so people start responding towards, and then they feel more energetic, okay. But yahan pe, if the micronutrient deficiencies are there, the chronic undereating pattern is continuing, you have a elevated cortisol, the gland is rarely it is a primarily issue of the gland, it is basically a issue of the poor nutrient support and other things which are ruling the body. Okay, so that's why we say that common thyroid mistakes includes only treating the TSH, the only marker, ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ में, because when your TSH goes high, the only verdict comes to you is like reduce weight, try to reduce weight. So people go on a calorie restricting diet, ठीक है. They start doing a lot of workout without realizing the body is supporting or no. Then they ignore the stress, even the sleep cycle, if it is not normal, that will also start giving you stress. Then doing a random iodine supplementation, this is also a very big no-no, so should not do it, because hardly body needs iodine, and that's being met if you are having like a good amount of salt, or if you are using a good amount of dairy or a good quality protein like eggs, and also your iodine requirement usually suffice. So you cannot force a stressed thyroid to function optimally, ठीक है. सर्वाइवल सिग्नल्स जब भी बॉडी को मिलेंगे, जब भी वो प्रेजेंट होंगे, लाइक द फाइट एंड फ्लाइट मोड, द मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू स्लो डाउन, no matter your thyroid is normal, I mean your TSH level is normal or it's high. Okay, so food and thyroid logic. Food is a metabolic safety signal. ठीक है, so when the calories are low, the cortisol rises. ठीक है, and the reverse T3 increases, and this decreases the T3. ठीक है, सो एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स, जब भी आपका एक डाइट जो है दैट इज गुड एंड सपोर्टिव, दैट विल ओनली हेल्प टू रिड्यूस द cortisol एंड सपोर्ट द T3 प्रोडक्शन. ठीक है, सो कंसिस्टेंट नरिशमेंट टेल्स द बॉडी दैट द एनर्जी इज अवेलेबल. ठीक है, एंड जो मेटाबॉलिज्म है वो सेफली रन कर रहा है विदाउट एनी बर्डन्स और कॉम्प्लिकेशंस. So that's why the thyroid will start functioning normally. Otherwise, just taking a pill of this thing T4 will not going to help. So iodine and salt. So iodine is essential for the thyroid hormone production, but अगर वो excess में होगा तो it will worsen the autoimmunity. ठीक है, and usually people don't test. They only test like T3, T4 and TSH. Rather, people who are on a medication protocol, they तो only check the TSH level, no matter how much the free T3 is going, where the free T4 is going. Anti-TPOs are तो far off from the list. ठीक है, so what I mean by this is that more is not better. The thyroid physiology works within a normal biochemical range only when it is supportive with all the nutrients and not just only the thyroid thing. ठीक है,
सो लो T3 लीड्स टू स्लोअर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, थर्मोजेनेसिस डिक्रीजेस, फैट ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस, ठीक है, एंड weight gain becomes a protective mechanism. The body is conserving the energy rather than utilizing it, ठीक है. तभी weight gain is basically adaptive physiology है, and it is not a lack of discipline की ऐसा नहीं है कि you are not or the person is not doing it, but this show is basically running from the hormonal level, not the surfacial level. So functional pathway अगर हम देखें तो this is a typical pattern which goes this way only, that stress, inflammation and undereating will lead to poor T3 action, will automatically lead to slower metabolism and will lead to weight resistance. ठीक है, so the system is intentionally slow. So, what is the logic? What should be the focus? The focus is to reduce the inflammation. That is one. Second, improving the gut health. As I said, if 20% of conversion or support is coming from your gut lining only, so you have to do measures to protect the gut lining and it has to be healthy. Then is supporting the liver function, ठीक है, normalizing the stress response and ensuring the adequate nutrition intake. That is how you can only support the thyroid to produce and to be in actionable form, ठीक है. आप पुश नहीं कर सकते थायराइड को, यू एंड जब तक ये जो ब्रेक्स हैं, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस एंड ऑल दीज ब्रेक्स, वन बाय वन करके यू नीड टू रिमूव ऑल दीज ब्रेक्स टू डू अ जस्टिस विद द थायराइड gland, ठीक है. So that's why a normal TSH does not guarantee a normal metabolism, ठीक है. The thyroid listen to each and every signal which is present, like your stress levels, the food you are taking, the inflammatory pattern which is running, the safety, ठीक है. The perceived safety is what the body actually uh, needs to be taken care of, ठीक है. सो जब ये सिस्टम स्टेबलाइज होगा, द थायराइड हार्मोन फॉलोज, एज आई सेड कि वी विल टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड वी विल टेक केयर ऑफ द अदर थिंग्स, let the weight automatically goes down from the system. So same ways, if we control on all these parameters, the thyroid will automatically start following, ठीक है. So this was all for today. uh, uh, Deep dive levels will be covered in the advanced clinical perspective courses. So that we will start with like 1st of April. We will try to start from 1st of April, the level 3. In case you are interested, now this is a time you can convert from level 1 to level 3 directly. Okay? So this was all, and I should just stop share now. And if you have any questions, we can just quickly. शिवानी, एक तो मुझे